Hello students, welcome to Shrestha Academy, a step towards the success. So dear students, the topic of today's videos is force and its types. Okay, so in the previous chapter we have studied about the motion. Okay, so if I ask what is the cause of motion or who is responsible behind any motion, okay, so the answer of this question is the force is the main cause of any motion. Okay, suppose if any object is moving, so definitely there is a external force acting behind the motion of that object. Okay, so we can say that the force is the main cause of motion. Okay, so let's start the today's video. Okay, so first of all we will see what is the force and what are the different effect of force. Okay, so after this we will classify the forces. Okay, we will see the types of forces. Okay, so let's start. So in a simple terms, pushing or pulling an object is a force. Okay, but dear students, this is not a proper definition or complete definition of a force. Okay, so similar to pushing or pulling, we can say lifting of an object, okay, as well as stretching or compressing of an object is also a force. So again, it is not a complete definition or proper definition. So what is the actual definition of force? Let's see it. Okay, so first of all I am going to define the force. So dear students, force is an external effort which can move a body if it is at rest, or which can stop a moving body, or which can increase or decrease the speed of a body, as well as which can change the direction of a moving body, or which can also change the shape and size of an object. Okay, so this is the complete definition of a force. Okay, so again समझ लेते हैं इसको simple terms में. So dear students, force एक an external effort है जो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मूव करा सकता है अगर वो रेस्ट पे है. साथ ही साथ बाय अप्लाइंग अ फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसे हम स्टॉप कर सकते हैं. ओके, साथ ही साथ हम फोर्स लगा करके बॉडी की स्पीड को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं. ओके, and at last by applying force we can change the shape and size of the body. Okay, so students, now we are going to see all this thing in the effect of force. Okay, so mainly we are going to see there are 5 effect of forces. Okay, so let's discuss one by one. Okay, so the first effect of force is that force can move an object if it is at rest. So let us understand this with the help of an example. Okay, so dear students, let us assume we are having a football and it is placed on the ground. Okay, so initial में football ground पे रखा हुआ है, वो rest पे है. Okay, but when we will kick it, okay, it will be in motion. ठीक है, so object पहले rest पे था, हमने उसे kicked किया, then वो क्या हुआ, वो motion में आ गया. Okay, so this is the first fact of force, that अगर कोई object अगर rest पे है तो by applying force we can move it. Okay, so dear students, let's see the second effect of force. Okay, so a force can stop a moving body, means by applying a force we can stop a body which is in motion. Okay, let's again consider the same example. If
the football is coming with certain speed towards us, okay, then by applying a force we can stop it, okay. Suppose एक फुटबॉल अगर हमारी तरफ आ रहा है, okay, जो कि इनिशियल में मोशन में है, so by applying a force we can stop it, okay. So this is the example that a force can stop a moving body. Okay, dear students, let's see the third effect of force. Okay, so a force can increase or decrease the speed of an object or body. Okay, so we can take the same example. Suppose if a football is coming towards us, then by kicking it hard we can increase the speed of the football. Okay, so this is the example that a force can increase the speed of the object. It can also decrease the speed of the object. Okay, so now we are going to see the fourth effect of force. Okay, so a force can change the direction of the moving object. Okay, so we can take the different example now. Now in the game of cricket, the bowler throws the ball towards the batsman. Okay, so the batsman hit the ball hard with his bat, okay, and change the direction of the ball. Okay, so this is the example that by applying a force we can change the direction of the object. Okay, so now we are going to see fifth and final effect of force, that a force can change the shape and size of an object. Okay, so let's take the example. Suppose, dear student, if we are having a rubber ball or a balloon, okay, so by applying a force, by pressing it with our hands, okay, from opposite direction, we can change the shape and size of that balloon or rubber ball. Okay, another example we can take, if we are having a spring, then by applying a force, okay, from two direction we can change the shape and size of the spring. Okay, so I hope, dear students, now आपको ये clear हो गया होगा what is the force and what are the effect of force. Okay, so again I am concluding, again I am defining what is the force. So force is nothing but it is an external effort which can move a body if it is rest, which can stop a moving body, or which can increase or decrease the speed of the object, or which can change the direction of the object, as well as which can change the shape and size of the object. So this is the complete definition of a force. Okay, so I hope, dear students, आपको ये clear हो गया होगा. Okay, so now we are going to see the types of forces. Okay, so let's see it. So, dear students, in a broad sense, there are two types of forces. First is the balanced forces, second is unbalanced forces. Okay, so now we are going to see in detail both type of forces. Okay, so let's see it. Dear students, as I told, there are two types of forces, balanced forces and unbalanced forces. Okay, so first of all we are going to see what are the balanced forces. Okay, so first of all we will define it, then with the help of this diagram we will understand. Okay, so let's define it first. So if the resultant of all the forces acting on a body is zero, okay, the forces are called balanced forces. Means अगर किसी बॉडी के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर उनका रिजल्टेंट या टोटल फोर्स अगर जीरो होता है, इन दैट केस उन सारे फोर्सेस को हम balanced forces कहेंगे. Okay, so let's understand. So here, dear students, in this diagram, okay, we are having a box or an object. ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर we are having two forces. We are applying two forces F1 and F2, okay, from opposite direction.
Okay, so dear students, if the resultant of force F1 and F2 is 0, it means here I have written in the mathematical form, here F1 plus F2 is equal to 0. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इट मीन्स हमारा जो फोर्सेस होंगे F1 F2 वो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे. ओके, सो मीनिंग क्या है? सो डियर स्टूडेंट्स, we know that the force is a vector quantity. Okay, so we know that what is the meaning of vector quantity. So vector quantity वो quantity होती है जिसमें magnitude के साथ direction included होता है. So force is a vector quantity. It means here the direction matters. Okay, so here we are having two forces F1 and F2, and both are acting on the body from opposite direction. It means अगर हमने यहाँ पे F1 पॉजिटिव लिया, ओके, so F1 is positive here, okay, in that case we have to take F2 negative. ओके, क्यों? क्योंकि F2 हमारा F1 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमें यहाँ पे साइन इंडिकेट करना होगा. सो हियर नेगेटिव साइन इज हियर. ओके, let F1 is equal to 10 Newton. Okay, also F2 is equal to 10 Newton. Okay, so हम F1 और F2 हमने दोनों को 10 न्यूटन का फोर्स लिया है. ओके, सिंस द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो यहाँ पे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन हमने यहाँ भी लिया है. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस कंडीशन अगर हम दोनों साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, इन दैट केस द बॉडी विल नॉट मूव. ओके, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा. कैसे होगा? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. सो हियर F1 is equal to 10. Okay, as well as here we are having F2 is equal to 10, but we will write here minus 10 because it is acting in opposite direction. Okay, so here 10 minus 10 we will have 0. So you can see here the resultant of two forces, यहाँ पे F1 और F2 इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ? टोटल या रिजल्टेंट फोर्स 0 हुआ. इट मीन्स the both forces F1 and F2 are said to be balanced forces in this condition. Okay, so dear students, in this condition what is happening? Although we are applying the force, okay, from two direction, but since both are of equal amount, okay, so that's why both are cancelling each other effect. Okay, so इस केस में बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा, बॉडी मूव नहीं करेगा. ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट इन द केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, although we apply the force but the body still remains in the rest position. Okay, so I hope dear students आपको बैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. Okay, so now we are going to see unbalanced forces. Okay, so let's see it. So now dear students, we are going to see what are the unbalanced forces. Okay, so first of all we will define it, then with the help of this diagram we will understand what is the actual meaning of it. Okay, so let's define it. So if the resultant of all the forces acting on a body is not 0, the forces are said to be unbalanced forces. Okay, means अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रही है उनका रिजल्टेंट अगर 0 नहीं होता है तो उन फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे. ओके, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस बॉडी में दो फोर्सेस अप्लाई किया है, F1 एंड F2. ओके, इन द केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस हमने F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिया था और F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिया था. ओके, बट हियर इन प्लेस ऑफ 10 न्यूटन वी आर हैविंग F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन. ओके, सो यहाँ पे हम F1 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और F2 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट
कि बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है. ओके, सो हियर इन दिस केस सिंस वी आर अप्लाइंग greater force from this side, so in that case the body will starts moving towards this direction. Okay, means जो बॉडी का मोशन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे F1 हमारा ग्रेटर फोर्स है. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेट्स सी. So dear students, as I said earlier, since force is a vector quantity, okay, so in this case we are having F1 is equal to 20, but we will take F2 minus 10. okay, so क्योंकि ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, so if we calculate this, so we will have 10 Newton. ओके, मीन्स जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो here you can see the resultant force is not zero. It means हमारे ये जो F1 and F2 forces वो unbalanced forces हैं. Okay, again I am repeating the definition. So if the resultant of all forces, okay, acting on a body is not equal to zero, ठीक है, ये 10 न्यूटन ये हमारे जीरो के इक्वल नहीं है. Okay, it means the forces are अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये अनबैलेंस्ड फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा. ओके, सो लेट्स सी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स आपने टग ऑफ वॉर गेम आपने सुना होगा या आपने खेला होगा, देखा होगा. ओके, सो व्हाट हैपन इन दैट गेम? द टू टीम्स pulls a rope in opposite direction. Okay, दो टीमें होती हैं जो अपनी अपनी ओर रस्सी को खींचते हैं. ओके, सो वी हैव अ सेंटर लाइन, हमें वहां पे एक मार्किंग लाइन होती है. तो जो भी टीम अपोजिट वाली टीम को उस बाउंड्री लाइन से अपनी ओर खींच लेता है वो टीम विनर होती है. ओके, सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, बिकॉज अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण ही वो दूसरी वाली टीम खींच करके वो पहली वाली टीम जो विनर टीम होती है उसकी तरफ आती है. ओके, सो आई होप आपको इस एग्जांपल से अनबैलेंस्ड फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.